Hey, hi guys, hi, how are you all? So, I hope that every one of you are doing good. And today I'm taking a session from my house. So, I welcome you all on board and let's start our today's session in some time. Just give me 1 minute. Let me close this all. How are you all? I mean, I can see only what 30 people watching, and it's not so good. So, what exactly is happening? I mean, क्या हो गया? Only 30 लोग ही क्यों हैं? Okay, so today was a very special day for us. मैं क्या बड़ा important message कर रहा हूँ ताकि थोड़े लोग नहीं क्या सब edit zone. How are you? I can see you are there. You are like actually you are attending the last class today, and I can see few other people like sir files नहीं upload हो रही GitHub पे. Parvesh, yeah, you need to like do it bit more nicely to actually get it done. इतना कोई rocket science नहीं है, try करो हो जाएगा. Okay, like legit try it, वो हो जाएगा. इतना कोई बड़ा rocket science नहीं है वो. Okay, so then who else I have right now? I have got Dipti and all. Okay, got it. Nice to have you all on board. अब आज का जो है to do, like today's to do is what's today's to do? Let me just turn off BGM. बारिश आ रहा है बाहर, so if power goes anywhere and all right, so please do 72% है. ठीक है, चलो कोई नहीं. इंटरनेट जाएगा तो प्रॉब्लम होगा, बाकी और कुछ नहीं. Okay, fine. Should we start? Yes or no? What is that? Please tell me in the chat and let's start. Okay, so let's start our today's uh, whole session. Today's whole session. Yesterday we learned to tell our KWARGS. Okay, I was supposed to teach you guys decorators, but then I realized yeah, hard concept to grant as argument to other functions returning other function. Yeah, basically this all are a part of this. And when actually I was seeing, I was like yaar complicated for complete our X and O game. Okay, so these are few modules. I will write down the tic-tac-toe में होता क्या है कि tic-tac-toe, oh shit man, ads are not so good. I'm sorry, I'll use no still tic-tac-toe का कोई if I use incognito more bad ads will come. Tic-tac-toe, okay, so tic-tac-toe is here itself. Fine, so X and O. Fine, so what exactly is happening here? Okay, game over. Got it. Restart. Sir, it's buffering. तुम लोग हो ना भाई? You guys are live, right? Yes or no? Give me 1 minute. Oh wow. I can see now. I think this thing is working fine. I think this thing is working fine now. अभी सही चल रहा है क्या? हाँ या ना? So what do you think? It's saying excellent. Up now, done, sure, pakka. You know what I have done? I've just gave a space to my this thing air to pass, and it is connecting very well with my mobile data. So yep, so it's totally working fine now. So let's just go ahead and continue the class. Fine. So okay, so all the people who left, so you guys can actually come back and we will start. So what exactly is a tic-tac-toe game? So what exactly is a tic-tac-toe game? Inside tic-tac-toe game, first you have a 9 space, 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Okay, 9 places you have where you can actually place certain markers, either X or either 0. So player A, if player A is taking X, so player O will mark it somewhere. So I am marking this in a scenario like okay,
ख़त्म हो गया ना गेम वैसे तो, ठीक है. So it's a X or O draw. Fine. So there are three conditions: either X will win, or either O will win, or either it will be draw. Right. So these are the three conditions which we have. Now we are live, but it's buffering. Again, it's buffering. Why it is buffering, guys? I mean, ये तो buffer नहीं करना चाहिए ना अभी तो फिलहाल में. So I hope this is fine to you guys right now. I think we will win this time. Oh wow, got it, done. So X is a winner. So see, this is what the whole game is. So the first module is that you have all the places empty. That's number one. Number two, user need to give input. So A or B. So first A is starting the whole game. Now B directly goes by, and B says what? So you just give all the entries. After each entry, the logic has to check if someone has won, yes or no. किसी कोई जीता कि नहीं जीता ये चेक करना है. Got it? So these are certain after checking those conditions, if someone is winning, show it as like okay, X won or O or like 0 won, whatever it is. Clear? So you want me to call it X or 0, or like you want me to call X or O? Okay, what should I call? I mean, because it becomes very tricky for me to pronounce it every time and time again. So please tell me in the chat. Now, let's just go ahead and start writing down all the modules. So the module number one, okay, so the module number one is declare a list with 9 blocks of empty space. Got it? That's the number one thing which we have in the list. The number two thing is the second stuff in the X or 0, print the board on screen. Okay. और फिर तीसरा चीज़ क्या है? आफ्टर प्रिंटिंग द बोर्ड, टेक इनपुट फ्रॉम यूज़र ए and user A or user B. Okay. Number 4, the number 4 is like okay, user A or user B with specific position. Check if the position is empty, then only take it as a valid input, else ask again. Right? Okay, clear? After the input is placed, check if some player has won, yes or no, और it's a draw. Clear? Then उसके बाद और क्या है यार? Ask if the user want to play again. Maybe enter the score, SC score. For all the matches. Clear? So these are the 7 steps as per me. I have written few other things also. Okay, fine, ठीक है, छोड़ो. So these are the 7 steps. Do you guys agree with me? हाँ है ना? Please tell me यार, yes or no. What is that? Are you guys with me? क्या बोलते हो? क्या बोलती है पब्लिक? समझ में आ रहा नहीं आ रहा क्या है? मतलब ये पर्टिकुलर स्टेप से अगर X और 0 गेम बनाना है तो. Sir, can you make the game in PyCharm as well? We can do that. First, let's because everyone is not PyCharm. I can build it in this thing, that is VS Code. Okay, I will do that, and I hope that you guys are with me. So let's start, and each one of it will be a kind of function in itself, because you need to define functions, or else this will become fairly complex very soon.
So the first thing is declare a list with the 9 blocks of empty space. Declare array, or like declare empty list. Okay, or like we can write it as empty list for xo. Okay, this has to return very simple thing. Okay, that is, we can just run a for loop for I in range 1 to 9. Okay, I'll just declare one tmp temporary list empty. Tmp list is equal to, okay, tmp list I is equal to this. So this is one very simple list, empty list xo. Sorry, empty list xo. I need to just do it as function. This is giving me last assignment index out of range. What is that? क्या है भाई, क्यों आउट ऑफ रेंज बता रहा है ये? Oh, sorry, tmp list. See, today you will see me like this only because I am not I'm not got this pre-written code or something like that. I'm just doing it in front of you. Okay, so don't think that कि हाँ सर सब कुछ करके आइए, फेल कैसे हो रहे हैं करके. List assignment index out of range. How the hell it is happening? वैसे रुक जाओ यार. Range 1 to 9. What the hell? Print I. Okay, 0 1 2 8. Fine. What is this? That's not written anything. Temporary list I equal to empty print. ओके, क्या हो रहा है भाई, क्या हो रहा है? अगेन प्रॉब्लम आ रहा है इसका. ओके, लेट्स जस्ट डू वन थिंग. How the hell it is possible? Do you guys know? Vishal, do we need any libraries for that? Yes, we will be requiring libraries for that. Okay, so today's assignment is basically this game. I actually don't know यार, ये एरर क्यों आ रहा है. मैं तो अभी भी सोच रहा हूँ ये एरर क्यों आ रहा है. ओके, सो I'm just not able to understand why. Is it because, छोड़ना यार, इतना सब कुछ क्या दिमाग लगा रहे हैं, अपना को प्रोग्राम से मतलब है ना. Let's just go ahead and remove this whole. I just tried doing it the other way, but it's fine. I'm just doing some kind of jigsaw. I don't know what exactly. I will read through it and I'll come back to you. कितना हो गया? 1 2 3 4 5 sorry 4 5 6 7 8 and 9.
clear. Return temporary. I don't like this approach, but yeah, fine. So मुझे ये approach पसंद नहीं आ रहा, पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा है. I'm just thinking like that. Or something like this will work. थोड़ा सा मैं time ले रहा हूँ. It's fine. I in range 9. Okay. Sure, man. We can do the simple thing, na? tmp list dot append ये छोटा सा चीज़ append करने से क्या होगा? Okay, let's comment it out. I don't want to write it again if I fail. tmp lst, okay, is equal to empty list and append शायद काम करेगा अभी. Yeah, now this is working. Clear? Sorted? Sir, assignment is mandatory for certificate. Yes, you need to do it. Okay, Aniket Shah, you also suggested me this thing. Thank you, Aniket. But yeah, so fine, sorted. So I was doing something super wrong. वो है ही नहीं index और उसके ऊपर मैं assignment कर रहा हूँ. So it's like that what I was trying to do. So but yeah, so first function is done. Clear? So the first function is declare a list. Sorry, declare a list with 9 blocks of empty space. Print the board on the screen. Okay, print board on the screen. So how to do that? Now let's do it. def, okay, def print board. I want to pass this particular sum list xo list. Let this be the name for for a in range 3. So 3 by 3 का matrix है ना. So 3 for or like simple, instead of doing this all thing, you can directly do it this way. Print first is like what? xo list 0. Then you know what exactly we need to place. This is pipe operator in between, and then again comma xo list, okay, 1. and फॉर्मेटिंग गड़बड़ा ना जाए इसके लिए मैं ये सब कर रहा हूँ. ठीक है, ओके. देन उसके बाद एक्सो लिस्ट 2. फाइन. अगेन द सेम थिंग. नाउ इंस्टेड ऑफ इट्स 3, 4, 5, 6, 7, 8. You know now why we did it from 0. अपने 0 से क्यों किया? Why actually we started writing it from 0? So please tell me in the chat, every one of you. So got it? Now there is one simple thing, okay, which we need to do. So let's run this. Print board, okay, xo list. Print board xo list. Share man, xo list नहीं, tmp list. इंस्टेड ऑफ, सो इसको पार करते हैं ना, टेम्परेरी लिस्ट की जगह पे इसी को पास कर देते हैं. बट हाँ, इसमें एक और रहेगा यार, एक और प्रिंट रहेगा. प्रिंट 2, 3, 4. इज इट लुकिंग? नो, इट्स नॉट लुकिंग लाइक x and 0. थोड़े और बढ़ाने पड़ेंगे. क्लियर लग रहा है क्या? अब ये थोड़ा सा लग रहा है ना, पर थोड़ा एक्स्ट्रा काम. 1 2 3, 1 2 3, 2 गुड़ा. ठीक है. सो दिस इज समथिंग विच वी हैव जस्ट डन in front of you guys. Clear? Sorted? Let me
remove this. Because I think this will end up in very much more good thing. Okay, so ऐसे ही रहना दो, चलेगा, छोड़ो. अब इसके बाद instead of like directly putting space, if I just want to, for an example, so see, print board, so 0 1 2 3 4 5 6 7 8, थोड़ा काट सकते हो, अभी भी 3 आइटम काट सकते हो. Done, I know, got it, done. So we have got this our x and 0 board, clear. So instead of this I need to put space. Clear, sorted, okay. So are we clear till here? यहाँ तक ओके है ना सब लोग? हाँ या ना, मैं चैट देख रहा हूँ तुम सबका, ऑल 107 पीपल. हाँ या ना यार, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, बताओ. एग्री, नॉट एग्री, कुछ समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा, कुछ तो बताओ. ठीक है, फाइन. प्रिंट बोर्ड हो गया. In print board there is one very serious stuff. Okay, there is one very serious stuff. Clear notebook output. Okay, so एक कोई तो है clear notebook cell output. So from import ipython dot display, import clear output, and clear output weight is equal to true, whatever it is. Let's see what exactly it is. So why am I implementing this? I am implementing this because every time this board will print, it needs to look like an update. So let's park it for some time. We will use it later. Okay, हम बाद में इसको use करेंगे. Take input from user A or user B with a specific location. So take input, right? Take input के अलावा भी ना first let's specify who will go first. Select who will go first. Okay, okay, done. Clear है? Okay, fine, clear, sorted. Okay, fine, चलो, done. Why I have done that is like यार भाई दरवाज़ा ये बंद कर दो यार. Can you guys please? Okay, fine, चलो ठीक है. So I have got this empty thing. Now I'm deciding who will go first, user A or user B. Okay, so who will go first. Okay, अब ये who will go first को decide करने के लिए we have to do one very specific thing. We have to use one random function. Okay, import random, I think random module in Python. Okay, so now random module in Python, it's like import random. Okay, कहाँ गया यार import random? A is equal to random dot something I need to give, either 0 or either 1. Okay, so random dot int 0 1. Clear? So let's just print A. I'm just trying out this whole thing. Who will go first? This function. Okay, it will give us a random
this thing. I think this will be the upper limit, so I need to give 0 to 2 because it will work in that particular range. No yaar, this has to be 0 1 only. It is inclusive of the range. 0 1, so it is giving me either 0 or either 1. Clear? So who will go first? If a equal to if a equal to 0, print player A will go first. थोड़ा सा मैं ट्रैक लूज किया लग रहा है मुझे खुद को ही कि मैं थोड़ा तुमसे बात करना कम कर दिया, मेरे को कुछ बाहर का सुना ही दे रहा था, ठीक है, जो कम उधर चल रहा है. आई गॉट डिस्ट्रैक्टेड ए बिट, बट या प्लेयर बी विल गो फर्स्ट. ओके, एंड whosoever will return something, return A. इसको प्लेयर लिख देते हैं. ओके, so see, player A will go first, like, so I will just try to quickly test this function for x in range 1 to 9. Okay, run this 9 times and see if what is it, a b a b b a a b. Okay, got it? Clear? So it is working totally fine, it's totally working fine. Okay, sorted है, right? काम कर रहा है ना randomly किसी एक को? Yes or no? Why my internet is gone or like what? Am I there with you? हाँ, वापस आओ यार भाई, कहाँ हो तुम लोग? केशव सर प्लीज़ शेयर द गूगल. अब ठीक है सर, प्लीज़ अपलोड collab link for the list of reference. Yes, I'll do that 100%. I'll give you this collab link. Okay, take input from user A or B with specific position. Got it? So now we have to take input, so let's just specify input. def take input. Now def take input, right? This will first take a small input, like let's write down position. Instead of take input, this will also give a kind of marker. I have marker here. I'll tell you where this marker will be used. अभी क्या होगा ना, जब take input करेगा ये, ठीक है, so when we will be taking a input from a user, we need two things. First, which user it is, either it is A or either it is B. कौन सा यूज़र है ये, नंबर वन, वो अपने को चाहिए. दूसरा अपने को चाहिए कि कौन सा पर्टिकुलर पोजीशन पे आपको ये जाके प्लेस करना है. ओके, विच पोजीशन यू वांट टू प्लेस. वो पोजीशन खाली है कि नहीं, अगर खाली है तो अमेजिंग, अगर नहीं खाली है तो उसको बताना, वापस एंट्री करो. क्लियर है ना? सॉर्टेड है, राइट? सो आई होप दैट यू आर विथ मी टिल नाउ. Okay, so instead of a marker it will be like player. Which player it is? POS take input, right? Input, hey player, please enter the position for your next move in between 0 to 8. ओके, इंटरनेट नहीं चल रहा क्या? देख एक बार. चल रहा है. ओके, मैं हॉटस्पॉट पे हूँ. ओके, सो दिस इज द केस राइट नाउ. देन यू चेक फर्स्ट if POS is greater than equal to 0 and POS is less than equal to 8. Okay, then only go ahead. Okay, print valid input, else
please give valid input again. ओके अभी देखो इसमें एक खेल है. ओके instead of if you have to just write down while. Okay, while POS is greater than this valid input, then go instead of directly okay, first let's print it out. Okay, I will go one by one. Clear? ये पर्टिकुलर पूरा आपको एक ये है. ओके, यू हैव गॉट दिस होल टेक्स्ट एंड ऑल. ओके, अभी मैंने इसको यूज़ कर रहा हूँ. ठीक है, टेक इनपुट. ओके, मैंने कल ही बोल दिया था कि 9:30 तक जाएगा भाई. सो प्लीज़ वेट करो. अगर आपको वेट नहीं करना तो आई कांट हेल्प इट. प्लेयर ए और बी, आई कैन जस्ट गिव 0 और 1. यहाँ पे तो इंटीजर का नंबर जाएगा. सो ओके, इसमें ये काम नहीं करेगा. सो इंस्टेड ऑफ दिस लेट वी कैन यूज दिस. ओके, ओके, इसको str करना हो पड़ेगा. ओके, hey 0 please enter the position for your next move. I will, if I enter 10 it will say not supported. सही बात है तेरा. इसको टाइपकास्ट करना पड़ेगा इंटीजर में. ओके, दिस हैज़ टू बी टाइपकास्ट. And so instead of the 0 and all, let me just write down something. Hey player, enter your position for your position in between 0 to 8. क्लियर? यही सबसे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन है भाइयों. अगर ये आ गया ना, तुम सब पूरा तोड़ लिए. ठीक है, if this is done, then you are done with entire stuff. So I'm writing down 10. It will say that please give valid input again, but it is not asking me again. ये वापस से आपको पूछ नहीं रहा है. Clear? Sorted? So now our job is what, our job is to make it one more time ask us कि like हाँ what exactly is happening. Okay, अगर गलत entry है तो वापस से पूछे. So that is going to be the game here, and let's just try it out. Okay, how this will work. So I will just put down a while. So before putting a while, I'll just put up a flag here. So flag 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 is equal to let's say 0. While flag is equal to 0, run the statements again and again. Okay, so what I'll do here, I will just do flag is equal to 0 only, and here I will just put up like flag is equal to 1. Okay, valid input आते से ही it will say flag is equal to 1. Clear? And it will exit out the loop. So let's try it out. क्लियर? फ्लैग स्टेटमेंट क्या, फ्लैग वाला वेरिएबल क्या कर रहा है, चेक कर रहा है कि क्या 0 है या 1 है. सो इफ आई गिव 10 इट विल से हे प्लीज एंटर द पोजिशन अगेन इन बिटवीन दिस. ओके, सो आई से 0, इट विल स्टॉप. ओके, दिस विल स्टॉप. क्लियर है ना? सॉलिड वैलिड इनपुट. ओके, clear? Sorted? Yes or no? You want me to again run it one more time? I'll give 100, it will ask me again. I will give 85, it will ask me again. Okay, if I give 34, it will ask me again. If I give 12, it will ask me again. जैसे ही मैंने यहाँ पे 6 दिया एंट्री में, so it is saying valid input, क्योंकि वो 0 से लेके 8 के बीच में. Are we guys clear about it? Sure? Can I go ahead? समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है? बताओ यार, समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है? I mean, are you guys with me? Yes or no? क्या यार तुम लोग हो या नहीं हो? कहाँ गायब हो गए तुम लोग? क्या है? It's saying lagging only.
I need to convert. Okay bro, that's it. Clear, यही है, बस यहीं तक है. हाँ, समझ में नहीं आ रहा क्या कि मैं बहुत ज़्यादा डिले में चल रहा हूँ क्या है. सो लेट मी ट्राई स्विचिंग. भाई पक्का वाईफाई चल रहा है, स्पीड चेक कर. एक मिनट. डन. So I can see now internet little bit going ahead. Fine. So take input. You have done with the input part also. Now slow है. Okay, I'll stick to my hotspot. Fine. Now after taking an input, now you have to do one more thing. You have to do one more thing. What you need to check if the particular instead of player, you also need something that is your list, temporary list, like x or 0 list. Okay, now you have to check one more thing to make it valid. Okay, to make it valid, first point is that okay, check if it is in between 0 to 8. That's number one. The second statement which you need to check is that particular position, is it equal to what we say, is it equal to empty, yes or no? If it is not empty, so please take the input again. So what we will do, we'll put one more if condition here inside this. If x0 list, okay, position pos which we took here, position equal to empty, then you say valid input, then you say it's valid input, else it will say please give valid input. Instead of that we can print here, please enter again it's occupied. Clear? So can you see these modules coming together? यार तुमको दिख रहा है क्या, समझ रहा है कुछ ऐसा? हाँ यार, कुछ आता मतलब लग रहा है एक्सेंट जीरो की तरह करके कुछ. ठीक है, instead of having flag 0 flag 1 here, I'll have flag 1 here and I'll put flag is equal to 0 here. Clear? So this is the beauty of using a while loop. Okay, देखो. So now I'm running it one more time. Now this time you will see this will break because I need to pass one more variable here, tmp. I'm giving 34, it's asking me again. This time I'm giving 3 valid input. It's like, hey, it works. Okay, it works. Clear? Done. So as soon as this is equal to 1, I would also like to do one more thing. Okay, now let's define one actual a temporary list. I will define one x0 list, xo list, xo list. ओके, पता नहीं तुम लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा. मैं थोड़ा इंटरएक्टिविटी पे कम मैं दिमाग लगा रहा हूँ थोड़ा, इधर एंटरटेनमेंट छोड़ के मैं इस पे काम कर रहा हूँ. सो दैट इज़ द केस राइट नाउ. I don't know if you guys are actually getting what I'm trying to do here in this whole. Please give me a confirmation. Okay, so x0, it is giving, I'm giving directly to इंटरनेट चल रहा है बट ये पता नहीं प्रॉब्लम अलग लेवल पे चल रहा है. हाउ टू डाउनलोड स्टूडियो, प्रेम कुमार यार, आई विल. चल रहा है क्या? चल रहा है. ओके, वैलिड इनपुट. सो ये जो एंटर वाले पे यहाँ पे स्पेस आ रहा है ना. ओके, डन. क्लियर? सो आई होप if I'll give 3 again one more time, it is saying valid input, but again let's one more time give 3. It will again say valid input because I'm not assigning that exo, I'm not updating that exo list. Okay, so what I need to do is like I need to update that actual list. I need to update that actual list. Okay, if it says that valid input, then I need to return the POS. Okay, I need to return the POS.
Clear? As soon as it becomes valid, I need to return the POS. And instead of returning also, what I can do is very simple thing. I can directly take this XO list, return the XO list only directly return the XO list. Let's try doing it. Return first XO list POS is equal to player. ठीक है, directly if player is equal to 0, then it has to be something else. It has to be something. Now ये क्या हो रहा है? ये हो रहा है बेसिकली अगर 0 है तो इसकी जगह पे अपने को डालना है x. I'm specifying the first user will go x, the second user will go o. Okay, I'm specifying that. Return XO list. Okay, flag 1 now. So all I have to do is like XO underscore list is equal to this. Now see what will happen. It will ask for a position. I am giving 2. It will say valid input. The next time when I'll be again saying 2, this time it will reject the input. Please enter again. It's occupied. See, it's occupied. Okay, अगर 2 की जगह पे वापस मैं अगर enter 2 करता हूँ ना तो reject करेगा. Now I'm putting 4. It is taking the input. Now if I'll print XO list, what is the list? This is the list. Now if I do print board, okay, थोड़ा कहीं दिख रहा है क्या x and 0 की तरह? प्रिंट x0 की तरह कुछ दिख रहा है क्या अभी? XO लिस्ट. ओके सर समझ नहीं आ रहा, सर कंफ्यूजन हो रहा है. ओके फाइन, ठीक है मैं आता हूँ, रुको. ठीक है, देखो अभी x0 यहाँ पे 2 जगह पे आ गया. क्लियर? अभी ओके मैंने किया क्या है अभी तक? सो फार व्हाट हैज़ हैपेंड, लेट्स ट्राई अंडरस्टैंडिंग इट. ओके सो अपन लोग बना रहे हैं XOR 0. सो वी गाइज आर मेकिंग XOR 0 project. In this x and 0 project, so these are the 8 steps which we need to do. So ये 8 step है जो अपने को बनाना है. So मैं एक एक करके सारे functions बना रहा हूँ. ठीक है, so अभी तक अपन चौथे function पे पहुँचे हैं. The first function was to declare a empty list. Okay, empty list जिसमें 9 positions हो. फिर दूसरा था कि बोर्ड को प्रिंट करो, अपन ने वो भी बनाया. फिर तीसरा था कि यार किसी एक रैंडम यूज़र को गेम स्टार्ट करने के लिए सेलेक्ट करो, अपन ने वो भी बनाया. फिर उसके बाद अपन ने टेक इनपुट फ्रॉम यूज़र आइदर ए और आइदर बी विद स्पेसिफिक लोकेशन, अपन ने वो बनाया. अभी इसमें क्या था कि सिंपल सा है, एक फंक्शन empty XO डिफाइन किया जो कि सारा ने क्या एक लॉजिक है. वो लॉजिक के थ्रू क्या करता है कि empty लिस्ट बनाता है. जितना तुम्हें 9 स्लॉट्स चाहिए थे ना, 9 स्लॉट्स का वो बना के तुम्हें दे रहा है. मैंने एक ग्लोबल वेरिएबल XO लिस्ट के अंदर उसको स्टोर किया. आर यू गाइस विथ मी? empty लिस्ट समझ में आया? सो प्लीज़ राइट डाउन empty लिस्ट और समथिंग इन द चैट. ये समझ में आया क्या? पहले तो ये बताओ, empty लिस्ट समझ में आया? फर्स्ट टेल मी दैट. यहाँ तक सब लोग हाँ है तो प्लीज़ टेल मी इन द चैट राइट नाउ, देन वी विल गो अहेड. empty लिस्ट लिखो यार, ताकि मुझे समझ में आए कि तुम्हें समझ में आया. ओके बहुत इजी है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है यार, मज़ा आएगा तुम लोगों को, पूरा ख़त्म होगा तब तक. ठीक है, सो empty लिस्ट समझा? ठीक है फाइन. सो आई कैन ओनली सी 3-4 दिस थिंग्स. वाई? क्यों भाई, समझ में नहीं आ रहा क्या? स्वीटी राणा, परवेश पांडे, गेमर अमित. ओके सो राइट डाउन, राइट. आई मीन क्या मतलब, मैं ज़्यादा बात नहीं कर रहा हूँ आज इसके लिए क्या भाई? मैंने कुछ गलत कर देगा तुम लोगों के साथ आज? तुम लोगों को समझ नहीं आ रहा कुछ? आई एम सॉरी, मैंने थोड़ा ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड प्रोजेक्ट उठा लिया लगता है फॉर द वेरी फर्स्ट टाइमर्स हियर. आई एम सॉरी फॉर दैट, बट वी गाइज विल मेक श्योर दैट अपन लोगों को ये समझे, दैट विल बी आवर दिस होल थिंग. ओके सो
बैटरी चार्ज हो गई है पूरी, सो लेट मी जस्ट चार्ज द स्टफ। ठीक है, सो अभी अब आई थिंक अभी आ गया भाई, सब कुछ सब आ गया है अभी काम कर रहा है, वाईफाई पे शिफ्ट हो गया, इट्स वर्किंग फाइन। ठीक है, so I hope right now we guys are back. I'm sorry yaar, I'm like, this is so frustrating to me, you know, why when I teach something and this whole thing happens, I cry like something because मुझे पसंद नहीं है ये, मेरा खुद का ये बोलते हैं ना कि लाइक फ्लो टूट जाता है। ठीक है, सो आई एम जस्ट स्विचिंग एवरीवेयर माई इंटरनेट। I mean, this is a problem legit I'm having for because of it's raining here, so इसकी वजह से ये प्रॉब्लम है, और कोई प्रॉब्लम नहीं, मुझे खुद को पढ़ाना है, ये पता नहीं। ठीक है, सो एक्स और ज़ीरो तक ये एम्प्टी लिस्ट तक समझा सबको, एम्प्टी लिस्ट तक समझा सबको, हाँ सब लोग हैं वैसे। सो डोंट फॉरगेट टू शेयर द गूगल कोलैब लिंक। 100% आई विल शेयर दैट यार, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए लिख रहा हूँ। ऑलरेडी आई शेयर्ड इट इन आवर फर्स्ट क्लास एनी विच वेज, सो यू कैन टेक इट फ्रॉम देयर ऑल्सो, बट आई गिव यू हियर। ओके, I'll exactly give you। ठीक है ना, द सेकेंड फंक्शन वॉज, जो अपना सेकेंड फंक्शन था क्या था, बोर्ड को प्रिंट करो स्क्रीन के ऊपर। फिर अपन ने वो किया, बोर्ड प्रिंट किया कि लाइक ये पर्टिकुलर एरे लो, एरे लेके उसको नहीं किया प्रिंट करो, सो वी प्रिंटेड दैट। ओके, सो अपन ने बोर्ड को प्रिंट किया, सो दिस इज द फंक्शन विच इज देयर टू प्रिंट द पर्टिकुलर बोर्ड। ओके, यस और नो? ओके, सो समझा ये प्रिंट बोर्ड? ओके, सो राइट डाउन प्रिंट बोर्ड इन द चैट। ओके, सो आपको लॉजिक क्या समझ रहा है वो भी लिखो चैट में इसके साथ ही साथ, ताकि मुझे समझे कि आपको समझा। नाउ आई कैन सी ओनली 2-3 पीपल राइटिंग इट, फाइन। गेमर अमित, आई थिंक यू आर फ्रॉम मुंबई राइट, सो आपके यहाँ पे भी बारिश हो रही होगी। देन द थर्ड फंक्शन वॉज टू हु विल गो फर्स्ट, प्लेयर ए पहले जाएगा कि प्लेयर बी पहले जाएगा, ये डिसाइड करना था। तो उसके लिए अपन ने रैंडम वाला जो मॉड्यूल है उसको इंपोर्ट करके अपन ने ये फंक्शन लिखा है। इसके अंदर प्लेयर को रैंडम इंटीजर सेलेक्ट करे, या तो 0 या तो 1। सो आइदर प्लेयर ए विल गो, आइदर प्लेयर बी विल गो। ओके, या तो ए पहले जाएगा या तो बी पहले जाएगा। और ए वाला इज ऑब्वियसली वी हैव स्पेसिफाइड, ए बोले तो इट हैज़ टू बी एक्स। ओके, सो एक्स प्लेयर बोलो या फिर ओ प्लेयर बोलो। ओके, क्लियर है ना? सो अपन ने स्पेसिफाई कर, अपन हार्ड कोड कर दिया, ए बोले फर्स्ट प्लेयर इज एक्स ओनली। इसको भी रैंडम कर सकते हैं, बट मुझे अभी करना नहीं, अगर आपको कन्फ्यूजन और क्रिएट नहीं करना, यहाँ पे करूँगा मैं, कर सकता हूँ बट आई एम नॉट डूइंग। देन चौथा जो प्रोग्राम फंक्शन है, टेक इनपुट फ्रॉम यूज़र ए और यूज़र बी विद अ स्पेसिफिक पोजिशन। इन द मीन टाइम यार मैं एक और चीज़ कर देता हूँ, आपको नहीं क्या, मैं लिंक शेयर कर देता हूँ गूगल कोलैब का। सो इफ़ यू वांट टू सी दिस व्हाइल आई एम राइटिंग, okay, replace, I have replaced this whole thing, and I'm also putting in this just below your just यहाँ पे लिख रहा हूँ नोट्स। फाइन भाई, मैंने गूगल कोलैब का लिंक दे दिया है, चेक करो वहाँ पे फटाफट। ठीक है, सो डन। सो ये हो गया अपना लिस्ट यहाँ पे स्पेसिफाई। ठीक है, ये अपना लिस्ट हो गया। कहाँ गया? हाँ, टेक यूज़र इनपुट, टेक यूज़र इनपुट। अब ये जो यूज़र इनपुट है, ये यूज़र इनपुट क्या करता है? हे प्लेयर ए, भाई जो भी तो प्लेयर ए है। ओके, सो मैंने यहाँ पे फ्लैग एक छोटा सा डिफाइन किया है वेरिएबल, फ्लैग इज इक्वल टू 0। जब तक फ्लैग 1 नहीं होगा तब तक ये लूप चलता रहेगा। मैंने वाइल के अंदर एक डिक्लेयर किया है कि ये लूप चलता रहना चाहिए। कब तक चलना चाहिए? जब तक ये 1 नहीं हो जाता। जैसे ये 1 हो जाएगा तो ये फ्लैग रुक जाए, ये पर्टिकुलर वाइल लूप रुक जाएगा। अब वाइल लूप कहाँ से कहाँ तक है? तुम देखोगे वाइल लूप नहीं है, पूरा ही वाइल लूप है वो। ठीक है, दिस होल इज़ अ वाइल लूप, दिस होल is a while loop, this whole is a while loop. Okay, now what exactly is happening in this while loop? ये while loop में हो क्या रहा है? ये पोजीशन ले रहा है यूज़र से, एंटर द पोजीशन। इसको अपन टाइप कास्ट कर रहे हैं इंटीजर में। ये मतलब जब यूज़र इनपुट देता है तो स्ट्रिंग में आता है, स्ट्रिंग को अपन नहीं क्या इंटीजर में कन्वर्ट कर रहे हैं। ठीक है, कन्वर्ट करने के बाद इफ़ पोजीशन 0 और 8 के बीच में है तो ठीक है, अगर नहीं है तो भाई सीधा फ्लैग 0 डालो और बोलो गिव वापस से इनपुट। ओके, क्लियर?
इफ पोजीशन 0 और 8 के बीच में तो ओके, वरना एल्स में जाएगा, एल्स में जाके वापस से 0 होके लूप वापस घूमेगा। ओके ना, समझ में आ गया इतना? यस और नो? व्हाट इज दैट? प्लीज टेल मी इन द चैट। भाई ये वॉच को कहीं और लेके जा, चार्ज नहीं नहीं, इट्स फाइन, ठीक है। सो आई होप यू गाइज आर क्लियर, I hope you guys are clear. Okay, so I hope you guys are clear till now. Okay, अभी ये इफ वाला जो कंडीशन है ये तो तुम्हें समझ गया कि ये तो चेक कर रहा है रेंज, ये 0 to 8 के बीच में है कि नहीं। अभी दूसरा रेंज क्या चेक कर रहा है, दूसरा क्या कर रहा है, दूसरा वाला ये जो है ये चीज़ क्या कर रहा है, ये वाला इफ के अंदर ये एग्जैक्टली कर रहा है जो XO लिस्ट अपन ने इसको दिया, जो अपना पेरेंट लिस्ट है, वो उसमें जो जगह अपन बोल रहे हैं जहाँ पे मुझे एंटर करना है, ओके, जहाँ पे मुझे अपना मार्कर एंटर करना है, वो एम्प्टी है कि नहीं। अगर वो एम्प्टी है तो भाई वैलिड इनपुट है, ओके, वैलिड इनपुट है। अगर नहीं है तो भाई प्लीज़ एंटर अगेन, इट्स ऑलरेडी ऑक्यूपाइड। ओके फाइन, क्लियर। सो दूसरा वाला इफ एल्स कंडीशन हो गया, समझ गया? यस और नो? प्लीज़ टेल मी इन द चैट गाइस, समझ में आ रहा है कि नहीं? ओके, समझ में आया? ये क्या हो रहा है, ये वाला चेक कर रहा है, ये वाला इफ एल्स कंडीशन क्या चेक कर रहा है, ये पूरा जो इफ एल्स कंडीशन है ये चेक कर रहा है कि भाई जो लिस्ट है, लिस्ट के अंदर जो पोजीशन है वो एम्प्टी है या नहीं है। अगर एम्प्टी नहीं है तो वो बोलेगा कि भाई इट्स ऑलरेडी ऑक्यूपाइड, तुम वापस एंटर करो, ठीक है, क्योंकि फ्लैग 0 हो जाएगा। फ्लैग 0 हो जाएगा तो क्या होगा, फ्लैग 0 होगा तो क्या होगा, व्हाट विल हैपन? सो प्लीज टेल मी इन द चैट। ओके, सो दैट इज वन। अभी अगर ये वैलिड इनपुट है, अगर ये वैलिड इनपुट है, ओके, सो यहाँ पे क्या है, इफ प्लेयर इज इक्वल टू 0, क्योंकि या तो 0 होगा या तो 1 होगा। अगर 0 है तो क्या है, अपन ने क्या स्पेसिफाई किया, इफ इट इज 0 तो इट इज x, इफ इट इज नॉट 0 मतलब एल्स कंडीशन में इट इज o। ओके, सो मैंने वही चीज़ यहाँ पे कर दिया। अगर वो x है 0, सॉरी वो 0 है तो वो x हो जाएगा, अगर नहीं है तो वो o हो जाएगा। तो वो पर्टिकुलर लिस्ट के अंदर ना उसको एंटर करना है ना, मार्कर को तो प्लेस करना है। मैं 1 और 0 तो प्लेस नहीं कर सकता ना, मेरे को या तो x प्लेस करना होगा या तो 0 प्लेस करना, o प्लेस करना होगा। तो मैंने वही लिस्ट के अंदर एंटर कर दिया है, क्योंकि ये वैलिड इनपुट है ना, तो मैंने उसको एंटर कर दिया है। क्लियर है, सॉर्टेड है यहाँ तक? ओके, यस और नो? फाइन। और मैंने फ्लैग इज इक्वल टू 1 कर दिया। फ्लैग इज इक्वल टू 1 करते क्या होगा कि पूरा वाइल लूप एग्जिट हो जाएगा, पूरा वाइल लूप एग्जिट हो जाएगा। श्योर राइट? यहाँ तक अभी समझ में आया सबको? क्लियर? सो बस ये मैं थोड़ा टेस्ट कर रहा था। अभी अपन ने बोर्ड को प्रिंट किया थोड़ी देर पहले, यहाँ पे प्रिंट बोर्ड एक्सो, ये एक्सो लिस्ट जो है ना मास्टर लिस्ट है, ये मास्टर लिस्ट है। अभी ये मास्टर लिस्ट के अंदर अगर मुझे कुछ एंटर करना है, चलो मैंने मास्टर लिस्ट शायद वापस से चलाया है ऊपर से, इसके लिए वापस से एक एक करके रन करके आते हैं। स्टेप नंबर 1, एम्प्टी लिस्ट लेगा, एम्प्टी लिस्ट आ गया मेरे पास। एक्सो लिस्ट जो है मास्टर लिस्ट है, ग्लोबल लिस्ट। अभी बोर्ड प्रिंटिंग का जो लॉजिक है वो एक बार टेस्ट कर ले रहे हैं। बोर्ड प्रिंटिंग के लॉजिक के अंदर भी अपन ने एक्सो लिस्ट भेजा तो पूरा सब एम्प्टी था। देन ये रैंडम प्लेयर वाला फंक्शन है, इसको अपन ने बस ऐसे ही लगा के रखा है, अभी बाद में रन करेंगे। फिर अपना जो चौथा वाला था दैट इज़ टेक इनपुट, इनपुट वाला जो पूरा फंक्शन है वो भी है। अभी इसके अंदर एक्सो लिस्ट इज इक्वल टू टेक इनपुट, प्लेयर इज इक्वल टू 0 प्लेयर, एंड आई एम टेकिंग दिस टू द एंटर द पोजिशन इन बिटवीन 0 to 8। अभी ये जो 0 to 8 है मैं इसमें दे रहा हूँ पोजिशन इज इक्वल टू 2। ओके, वैलिड इनपुट है क्योंकि एम्प्टी है इसलिए वो ले लिया ऑलरेडी, ठीक है। अभी मैं इसको पूरा डिलीट कर रहा हूँ, डन। फिर सीधा मैं क्या करूँगा, ये जो बोर्ड वाला पॉइंट है इसको यहाँ पे मैं प्रिंट बोर्ड को एक बार प्रिंट करके देखूँगा मैं। आई विल प्रिंट इट दिस। सो देखो सेकेंड मतलब 0 1 2 सेकेंड पोजिशन पे मेरा एंट्री हो गया है। अभी मैं वापस एक और बार इसको एंटर करूँगा, इस बार भी मैं 2 देने का ट्राई करूँगा, इस बार भी मैं 2 देने का ट्राई करूँगा। ओके, दिस टाइम ऑल्सो आई विल राइट डाउन 2 एज एन इनपुट। व्हाट इट विल से, हे ब्रो एंटर अगेन, इट्स ऑक्यूपाइड। काम कर रहा है अपना लॉजिक, काम कर रहा है कि नहीं कर रहा, हाँ या ना? सो दिस टाइम आई विल एंटर 4। ओके, सो दैट इज वर्किंग। अभी मैं क्या करूँगा, मैं वापस प्रिंट करके देखूँगा, ठीक है। आई विल प्रिंट द बोर्ड। सो कहाँ पे एग्जैक्टली प्लेस हुआ है देखते चलो।
ठीक है, मैं इसको प्रिंट करके देखा तो देखो भाई सेकेंड पे भी है और फोर्थ पे भी आ गया। डन। अभी अपने को जीतने के लिए कौन सा वाला चाहिए, 4 हो गया, 5 6, अपने को 6th वाले पे अभी प्रिंट करना है, राइट। सो क्लियर है, समझ गए कि नहीं समझे, राइट। सो नाउ अगेन 0 एलिमेंट ओनली एंड दिस टाइम आई नीड टू राइट डाउन 6। ओके क्लियर। सो अभी मैं ओनली ज़ीरो मतलब प्लेयर फर्स्ट प्लेयर को ही ले रहा हूँ, इसीलिए वो सब जगह पे एक्स मार्क कर रहा है। इसकी जगह पे अगर मैं 1 डाल देता हूँ तो वो 0 मतलब ओ मार्क करेगा, ओ ओके, एक्स एंड ओ है ना, टिक टैक तो में एक्स और ओ होता है, एक्स और 0 नहीं होता वो, ठीक है। सो वो ओ मार्क करेगा अगर मैं इसमें 1 डाल देता हूँ तो, बट मैं अभी 0 डाल के आपको एग्जाम्पल दिखा। अभी एक और बार प्रिंट कर लेते हैं बोर्ड को, लेट्स प्रिंट दिस बोर्ड वन मोर टाइम। ओके सो देखो ये हो गया, ये जैसी अब ये 3 का मतलब पैर बन गया, ओके ये जैसी 3 का पैर बन गया, वी शुड डिक्लेयर दिस एक्स एज अ विनर, है ना। एक्स बोले तो प्लेयर नंबर 1, उसको विनर की तरह डिक्लेयर करो। ओके क्लियर है, यस और नो, हाँ है ना। एनीवन हेल्प मी राइटिंग कोड यूजिंग फंक्शन टू फाइंड प्राइम और नॉट। ओके then we have got sure sir, where you share that in the description. If you go in the description you will find one basic list. Please refresh this video, I have just recently added, open it one more time, go to the description. In the description you will find out notes करके मैंने enter किया है, ठीक है, notes करके enter किया है मैंने। क्लियर, यहाँ तक ठीक है, ओके है। अभी मैं तुम्हारे थोड़े आसानी के लिए एक चीज़ करने वाला हूँ, ये 0 आएगा तो ओ आना चाहिए, अगर 1 है तो एक्स आना चाहिए। क्यों, क्योंकि लाइक मैं देख रहा हूँ थोड़े लोग कंफ्यूज हो जाएंगे वापस से। सो 0 मीन्स, वेयर इज़ दैट, हाँ, सो 0 मीन्स इट शुड बी ओ बी में प्लेयर बी इज इक्वल टू एक्स। वी हैव द लग्जरी ऑफ डिक्लेयरिंग इट ऑन आवर सेल्फ, सो आई एम रिप्लेसिंग, मैंने बस रिप्लेस कर दिया ताकि थोड़ा ईजी हो सबको। ओके फाइन, सो बस मैंने थोड़ा रिप्लेसिंग करके ना, 0 डालो तो मतलब भाई ओ आएगा। अगर मैं फॉर एग्जांपल 1 डाला मैंने यहाँ पे, ठीक है, देखो अभी यहाँ पे लेट्स से अब मैं 0 डाल दिया, 0 पोजीशन, ओके। तो सी यहाँ पे ओ आया है, डन डन क्लियर। 0 पे अभी ओ आ रहा है, अब मैं इसके ऊपर 1 करता हूँ, 1 करके लेट्स से आई एम राइटिंग डाउन 7 पोजीशन तो एम्प्टी है, तो 7 एंटर कर रहा हूँ, तो ये क्या बता रहा है, 7 पे x आ रहा है, ओके। 1 इज इक्वल टू एक्स, 0 इज इक्वल टू ओ, ओके क्लियर है ना, सॉर्टेड है, राइट। अभी समझ रहा है सबको, ओके ओके। आई होप दैट यू गाइज आर क्लियर अबाउट इट, फाइन। मेरे को थोड़ा ये सारा कचरा मिटा लेने दो, ना तुम लोग कंफ्यूज हो जाओगे ये क्या हो रहा है करके। फाइन, ये सारा अपना जो टेस्टिंग ट्रायल का काम था इसको मैं निकाल दिया, डिलीट कर रहा हूँ ताकि अपन लोगों के लिए इजी रहे। डन है, क्लियर है, सॉर्टेड, इसको रहने दो, डन। अब ये यूज़र इनपुट हो गया, ठीक है, टेक इनपुट, चेक ए, ओके, आफ्टर द इनपुट इज प्लेस्ड चेक इफ सम प्लेयर हैज़ वन और इट्स अ ड्रॉ, ओके। चेक इफ सम प्लेयर हैज़ वन द गेम, येस और नो, क्लियर। अभी कंडीशंस क्या है जीतने की, ओके। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स सी इफ द गेम इज चेक विन, सेम अपना एक्सो लिस्ट पैरामीटर ले रहे हैं, और इसके अंदर इफ, ओके, लेट्स जस्ट राइट डाउन इफ, नहीं पहले तो फॉर लूप लो, फॉर आई इन रेंज, ओके, फॉर आई इन रेंज 1 to 9, ओके, अलग यू कैन से टिल 9, ओके, मतलब 0 to 8 आएगा, ठीक है। सो इफ एक्सो लिस्ट आई इक्वल टू स्पेस, सॉरी नॉट इक्वल टू, एक काम करो जो इक्वल टू स्पेस, ओके, फ्लैग इज इक्वल टू 1, सेम वही फ्लैग वाला वेरिएबल यूज़ करेंगे, फ्लैग इज इक्वल टू 0, राइट,
So there has to be 3 conditions. So let me just write down these 3 conditions. Win अगर कोई होता है ना, या तो it has to be 0. 0 बोले तो player 1 0. If return is 0, then player 1 won. Player A is winner. If return is 1, then player B is winner. If return is 2, then it's a draw. ओके क्लियर है ना, सॉर्टेड. ये स्टेटमेंट समझ में आ रहा है, ये स्टेटमेंट समझा. अपन रिटर्न क्या करें, अपन देख, अगर ये भाई देखो अगर कोई भी एम्प्टी नहीं है, ओके, सो इफ़ नथिंग इज़ एम्प्टी, okay, so then it will directly say कि like if flag is equal to 0 and if nothing is empty, it will say return 2. Now return 2 is what? Return 2 is basically draw. But before doing this we need to check for if any kind of winner is there, because पहले क्या करेगा ना, वो पहले अगर ड्रॉ के लिए चेक कर लेगा तो मतलब सारे जगह ऑक्यूपाइड, मतलब सारी जगह खाली है कि नहीं. बट इससे पहले एक चीज़ करना होगा, चेक इफ़ देर इज़ सम प्लेयर इज़ अ विनर. सो पहले अपन 0 1 फिर बाद में 2 पे आएंगे. अपन लास्ट स्टेटमेंट पे पहले चले गए. सो अपने को पहले वाले 2 स्टेटमेंट पे पहले काम करना है. क्लियर, सॉर्टेड. ओके, सो यार बताओ ज़रा क्या मतलब. आई एम गेटिंग इट, बट आई रिक्वेस्ट यू टू रन द होल प्रोग्राम इन VS Code एट लास्ट. 100% ओम प्रकाश गुप्ता, आई विल डू दैट. ओके, सो समझ में आ रहा है क्या तुम लोगों को, हाँ या ना, पक्का आ रहा है. गॉट इट, फाइन. सो प्लीज़ टेल मी इन द चैट इफ़ यू गाइज आर विथ मी, यस और नो. ओके, सो मुझे अभी भी समझ नहीं रहा क्यों यार. मतलब ये स्टेटमेंट्स तो शायद तुम्हें समझ गए. ठीक है, रिटर्न क्या करना है अभी, चलो चेक करते हैं. इफ एनीवन इज विनिंग, इफ नाउ देयर इज अ लाइक काइंड ऑफ टन्स ऑफ स्टेटमेंट्स. ओके, अभी क्या क्या प्रोबेबिलिटी है जीतने का. मतलब अगर अपन बोलते हैं कि वी नीड अ विनर, सो विनर नीड्स टू बी ऑन विच ऑल प्रोबेबिलिटीज. इफ़ x इज इक्वल टू इन दीज ऑल पोजिशंस, ये सारी चीज़ें हैं. इफ एक्सो लिस्ट के अंदर मैं बस थोड़ा और स्टेटमेंट लगा के करने वाला हूँ. ठीक है, कौन कौन से साइड में तुम जीत सकते हो. ठीक है, पहले तो तुम्हें देख लेते हैं. राइट, आइदर तुम ऐसे आ जाओ, आई मीन दिस वन इज़ द विनर, ओके, दिस इज़ अ विनर, दिस इज़ अ विनर, दिस इज़ अ विनर, दिस इज़ अ विनर, द सेम वे 1 2 3. सो कितनी पॉसिबिलिटी है जीतने की, मतलब जीतने की पॉसिबिलिटी क्या क्या है. सो 1 2 3, ओके, 4 5 6 7 8, मतलब डायगोनली 2 और बाकी तो 3 रो 3 कॉलम. सो ये अपना जीतने का प्रोबेबिलिटी है. राइट, यस और नो. सो हाँ या ना, समझ में आया क्या बोल रहा हूँ मैं, जीतने की प्रोबेबिलिटी. ओके, अभी यार तुम लोगों को समझाने के लिए मैं एक और चीज़ करता हूँ. TMP इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8. ओके, प्रिंट बोर्ड TMP. ओके, सो क्या हो गया यार, so it has to be 0 here. Done. So देखो, so ये पर्टिकुलर बोर्ड है. so 0 1 2 is one winning range, 3 4 5 is another winning possibility, 6 7 8 is one more winning possibility. Either the other possibility is 0 3 6 1 4 7 2 5 8, एक और ये विनिंग कॉम्बिनेशन है. एक और कॉम्बिनेशन है 0 4 8, एक और विनिंग कॉम्बिनेशन है 2 4 6. समझा, अभी समझा कि विनिंग कॉम्बिनेशंस क्या है, हाँ है ना. आई मीन, आर यू गाइज विथ मी, yes or no? I am not going to go finish this class until unless I don't finish this, because it's very good concept to learn. अभी बताओ तुमको कितना समझ में आ रहा है, क्योंकि तुम लोगों को समझ नहीं आएगा तो यार ऐसा मतलब नहीं है यार. ओके, सो ठीक है. सो समझ में आ रहा है तुमको, पक्का समझ में आ रहा है. श्योर. व्हेन वी गेट द सर्टिफिकेट एंड हाउ, यार वो बहुत सिंपल स्टेप है यार. वो सर्टिफिकेट लेना तो क्या, तुम्हें सर्टिफिकेट लेने के लिए आया तो ये जाओ,
इस पे जाके तुम अटेंडेंस मार्क करो, जस्ट रिफ्रेश दिस, you know where it is. You just have to go and give the attendance mark, whatever it is, submit your attendance. Right after you submit your attendance, refresh, and it will automatically give you a generate certificate ka button. Click on this generate certificate, click here, click here, click where these all data points, download it, give your name, unlock it using 50 LU coins. So this is as simple as that. You can download your certificate like this. बट सर्टिफिकेट के लिए अगर आया तो लेके जाओ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है. यू कैन शेयर इट ऑन लिंक्डइन एंड व्हाट्सएप ऑल्सो टू योर फैमिली मेम्बर्स. आई विल सजेस्ट यू जस्ट डू इट, ओके, बिकॉज फैमिली मेम्बर्स को पता होना बहुत बड़ी चीज़ होती है, ठीक है. सो आई विल शो यू हाउ यू कैन डू इट, ओके. जस्ट गो हियर व्हाट्सएप पे एंड ऐड नेम, रिलेशनशिप, बेस्ट फ्रेंड वाला रिलेशनशिप भी है, अगर गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड को भेजना है तो वो डाल के भेजो, एंड व्हाट्सएप नंबर डालो. दे विल गेट अ नोटिफिकेशन दैट you are using it, and this is your certificate. So this is my certificate, Sai Kiran. I have completed this program and it is certified by Google, ITM and NSDC. Okay, so ये है भाई सर्टिफिकेट डाउनलोड. अगर आपको पढ़ाई करना है अभी तो कंटिन्यू करो, ठीक है. अगर नहीं पढ़ाई करना तो बताओ, आई विल ऑल्सो स्टॉप, बिकॉज आई एम हियर टू टीच यू ऑल. So that's it. Let's go back. So fine, these are the winning combinations. I'll not waste much time now. 0, if x list 0 and 0, अच्छा 0 is equal to या तो x होगा या तो 0 होगा. सो अपन क्या प्लेस कर रहे हैं इधर, xo and xo list 1 is equal to वापस से x 1 और ये 2, ठीक है. और अभी बहुत सारे कंडीशंस आएंगे, बहुत ज़्यादा कंडीशंस आएंगे. xo इज इक्वल टू 0 1 2 और xo इज इक्वल टू, फाइन. नाउ यू राइट डाउन योर ऑल कंडीशंस, लाइक तो हो गया 3 4, ओके. यहाँ क्या आएगा 5, ओके. और वापस से कॉपी पेस्ट करो. और दिस इज बिकमिंग फेयरली कॉम्प्लेक्स वेरी इजीली. थोड़ा इसको तोड़ते हैं, ओके. और एक्सो व्हाट इज दैट, कहाँ पे 3 4 5 भी हो गया, 6 7 8. नाउ द कॉम्बिनेशन इज 6 7 8, okay. Again, or now what are the conditions, 0 3 6. Let's write down 0 3 6 0 3 6. मैं क्या कर रहा हूँ बताओ ज़रा, तुम लोगों को समझ में आ रहा है? ओके, सो समझ रहा है क्या तुम लोगों को, बताओ ज़रा. आर यू गाइस विथ मी? ओके, सो यहाँ पे वापस से एक और लगा देते हैं. और ठीक है. और कहाँ तक हो गया भाई, 0 3 6. आफ्टर दैट व्हाट इज दैट, आफ्टर दैट वी हैव 0 3 6 हो गया 1 4 7. द नेक्स्ट इज लाइक 1 4 7 1 4 7. और ओके, नाउ द नेक्स्ट इज व्हाट, 2 5 8 2 5 8, क्लियर. और ठीक है, व्हाट इज द रेंज नाउ, व्हाट इज द डायगोनल, 0 4 8, ओके. 0 4 8 6 4 2, 0 4 8, what is the other one, 6 4 2, और 6 4 2. भाई इतने सारे कंडीशंस है तुम्हारे, ठीक है. Will it work like that? Now let me just try bridging the gap.
ठीक है, ये सारा कुछ ना मैं एक ही इसके अंदर लेके आ गया हूँ अभी। शे मैन, इसको सीधा एक्सो लिस्ट करना पड़ेगा। ठीक है, एक छोटी सी गलती की वजह से इफ़। ओके, सो अगर ये हो जाता है, मतलब अगर एक्स वाला जीत गया समझो, ठीक है, अगर एक्स जीत गया, प्रिंट प्रिंट क्या, प्लेयर एक्स क्या था, एक्स इज इक्वल टू प्लेयर 2, प्लेयर बी इज विनर, रिटर्न रिटर्न 1, क्या रिटर्न करना है, 1 रिटर्न करना है, रिटर्न 1। ओके, अभी सेम कंडीशन इसके ऊपर जाएगा, अभी इसके लिए किसके लिए जाएगा, 0 के लिए जाएगा और ओ के लिए। ओके, यहाँ हर जगह पे अभी ओ लगाते जाओ। क्लियर है ना अपन क्या कर रहे हैं अभी अपन लोग, थोड़ा कॉम्प्लिकेट हो जाता है फेयरली थोड़ा। ओके, ओ ओ ओ, वापस से यहाँ पे ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ एंड ओ, गॉट इट। आई थिंक यार मैं ले लेके ना बड़ा कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट ले लिया तुम लोगों के लिए, एकदम एंथू एंथू में तुम लोगों ने चिल्ला दिया, मैंने भी बोल दिया, उसके बाद अभी ऐसा हो रहा है कि ख़त्म ही नहीं हो रहा प्रोजेक्ट। तुम लोगों को समझाते समझाते मेरे को टाइम लग रहा है। जनरली आई डोंट टेक मच टाइम इन एक्सप्लेनिंग थिंग्स, बट दिस टाइम इट इज़ डिफरेंट स्टोरी बिकॉज it is fairly a complex project यार, it's not so easy. Okay, ठीक है, डन। ऊपर वाला सब ओ है, अगर ऊपर वाला अगर जीत जाता है तो इट हैज़ टू रिटर्न 2, सॉरी इट हैज़ टू रिटर्न 0, एल्स सॉरी एलिफ। ओके, सो इफ दिस इज द विनर, क्या एरर है भाई, अच्छा एलिफ दिस और एल्स, आई डोंट थिंक वी इवन हैव टू डू दिस मच कोड, वी कैन जस्ट डायरेक्टली से दैट अगर पहला वाला नहीं जीता दूसरा वाला नहीं जीता तो सीधा ड्रॉ ही है फिर, ठीक है, वी कैन अज्यूम दैट, दैट्स इट। सो हियर इज़ आवर होल लॉजिक। ओके, सो ये लॉजिक है, अब ये लॉजिक के अंदर अपन लोग ट्राई करेंगे अपना बड़ा वाला जो लिस्ट है एक्सो लिस्ट, उसको लेके आके ट्राई करते हैं, ठीक है, डन। तो थोड़ी जगह पे तो भाई एंट्रीज हैं, सो लेट्स प्रिंट दिस, प्रिंट बोर्ड एक्सो लिस्ट। ओके, तो भाई x जीतना चाहिए ना इसके हिसाब से, तो x मतलब प्लेयर b, so player b should win, right? So let's try if player b is winning in this check win function is also done, check win, and in this we are checking player b is winner and 1 is the output. Is it working guys, is it working? Okay, yes or no? So please tell me in the chat, काम कर रहा है? 642, I did provide 642, 642, okay, what it should be, did I provide something wrong, guys, कुछ गलत दिया क्या मैंने, 642, अरे यार वापस से टेम्प, ओके, सो 642, हाँ सही है ना, 048 सही है ना,
642 is the answer. It is right only. Did I do some mistake somewhere? You guys were monitoring me, right? 345 048 है ना, 048. हाँ सब सही है भाई. डायगोनल इज ऑल्सो वर्किंग फाइन. ओके सर जी आज लेट हो गया, मैं फैमिली के साथ बाहर आ गया था. ओके अनमोल पिंटू, गॉट इट. गेमर अमित इज आस्किंग सर जी सर्टिफिकेट डाउनलोड में होम एड्रेस मांग रहा है. वाई वी नीड टू गिव दिस होम एड्रेस टू डिपार्टमेंट पीपल इफ दे आस्क. डिपार्टमेंट इज लाइक बिकॉज यू आर गेटिंग अ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सर्टिफिकेट. वंस यू गेट दिस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सर्टिफिकेट राइट, सो दे विल आस्क कि भाई व्हाट इज़ द एड्रेस जिसको तुमने सर्टिफिकेट दिया, उसका नाम बताओ, नंबर बताओ, पता बताओ. सो दैट टाइम वी नीड टू गिव. सो दैट इज द रीजन वाई इट इज़ आस्किंग. क्लियर. सो नाउ वी आर डन विथ चेक विन ऑल्सो. We are done with this stuff too. Now let's just go and assemble, ask if user want to play again, enter the score for the user. Now let's try mapping it out entirely. Okay, so df wanna play, no, leave this. Okay, just let's get this whole thing in one function. Play xo, right? This is, leave this whole, just I'm writing the code. First of all it's like empty list. I need to define a empty list. xo lsd is equal to empty list. I have defined empty list. I am assembling the whole code guys. Okay, मैं सारा कोड अभी assemble कर रहा हूँ. ठीक है, काम कैसे करता है देखते हैं. इसको डिफिनेशन में डालना बहुत इंपॉर्टेंट होगा, बट ठीक है, फन बाद में देखते हैं. देन उसके बाद क्या करना है, प्रिंट बोर्ड. ओके एक्सो एलएसटी. ओके देन इसके बाद प्रिंटिंग के बाद क्या होगा, सबसे पहले सेलेक्ट करेगा प्लेयर, PLAY, प्ले इज इक्वल टू शायद सेलेक्ट कुछ नाम दिया था ना अपन ने, विच प्लेयर ये नाम दिया था, क्या नाम दिया था फंक्शन का, हु विल गो फर्स्ट, राइट. इफ प्ले इज इक्वल टू 0, whatever, play, सीधा सिंपल play. Then we will take यार इसमें एक और फंक्शन आएगा यार, पता है, इसमें एक और फंक्शन आएगा, इसमें एक और फंक्शन आएगा. ठीक है, चेक प्लेयर तो हो गया. अभी चेक प्लेयर के अलावा पता है इसमें एक और फंक्शन क्या आएगा, इसमें एक और फंक्शन आएगा कि लाइक हु इज, इफ दे आर नॉट विनिंग, इसमें एक और चीज़ आएगा जिसमें मैं अटक गया. ठीक है, आई एम स्टक हियर वन मोर प्लेस, बट ठीक है फाइन, लेट्स जस्ट गो अहेड. Who will go first is decided. After that, what is the next function? Take input. But before taking input, there has to be one more while loop or something like that. Okay, fine, इधर ही लिख देते हैं, छोड़ो. I'll explain this later, just give me 1 minute. Flag is equal to 0 for I in range 9. Okay, if
exo list I equal to this flag is equal to 1, else that's a tick. Okay, so what I'm checking is like if all the board elements are placed, yes or a no. If not, then okay, you have one more chance. If not placed, अगर सिंपल सी बात है कि कोई अगर एम्प्टी कोई अगर एलिमेंट अगर खाली है क्या, कोई जगह खाली है क्या, अगर कोई जगह खाली है तो फ्लैग को एक कर दो. तो अगर फ्लैग अगर एक है, so if flag is equal to 1, it will give -1. If it is flag is equal to 0, it will give directly 2. मतलब draw हुआ कि क्या हुआ. So while के पहले यहाँ पे एक चीज़ आएगा, that is check if everything is full. Is everything full? Is everything full is equal to 0. Okay, so you can write down false false. Is empty भी लिख सकते हो, empty is empty मतलब कोई जगह खाली है क्या, so it will be true. So is empty. ओके, अगर मतलब x और 0 के अंदर जो 9 स्लॉट्स है वो 9 स्लॉट्स में अगर कुछ खाली है क्या तो इधर आएगा. सो नाउ टेक इनपुट. ओके, player is equal to now we have to like juggle, like पहले अगर A जा रहा है तो बाद में B जाना चाहिए, बाद में फिर वापस A जाना चाहिए एंड ऑल. क्या हो गया? ठीक है, तो हाँ ठीक है. So now the next thing which we have got here, if while it is empty, check if like it is first location or second location, what it is. Okay, भाई कितने लोगों को लेट हो रहा है? Please share the PDF form. Sir, you are doing it seems too easy but it's complex if you do accurately. Your grades are okay. Fine. So now thank you Lovepreet for that message. Fine. Now while if it is empty, yes or a no, first either it will be A or either it will be B. So now I'm just putting out one simple logic. Player is equal to player plus 1, like chance, chance is equal to chance plus 1. Now by default chance is equal to 0. Okay, fine. If chance percentage 2 equal to 0. Okay, ये थोड़ा गड़बड़ वाला लॉजिक है कि पहले अगर A को दे रहे तो बाद में फिर B को देना चाहिए. Let's create this if empty df chance okay, chance A take
टेक इनपुट के अंदर ना फिर अपने को क्या क्या पैरामीटर देने हैं, या तो प्लेयर देना है, या तो 0 या तो 1. सो बाय डिफ़ॉल्ट ठीक है. और भाई क्या है टेक इनपुट के अंदर, क्या है और क्या चीज़ है टेक इनपुट के अंदर? वी हैव गॉट एक्सो लिस्ट which we need to ask here. No, we already have our exo list here. ठीक है. सो एक्सो लिस्ट इज इक्वल टू एक्सो लिस्ट. नहीं, इसको करने की ज़रूरत नहीं है. while पता है, like I mean when you do random directly take a challenge and you start coding, right, what happens basically is you build the logic on the go. मैं तुम लोगों के साथ ही नहीं क्या लॉजिक बना रहा हूँ यहाँ पे. so that's one thing which actually matters a lot. and so play is equal to this. अगर play is equal to 0 हुआ तो फिर play is equal to 1 हो जाएगा. अगर ये 1 है तो ये वापस ही हो जाएगा. ओके, एंड इट विल चेक इज़ एम्प्टी. हाँ, अब इसके अंदर ना एक और चीज़ ये चेक करेगा कि क्या करेगा कि लाइक चेक व्हेन. ओके, चेक व्हेन के अंदर अपने को बस बेसिकली क्या भेजना है भाई. चेक व्हेन के अंदर तो एक्सो का लिस्ट भेजना है डायरेक्टली. ओके, so we have to just send this particular exo list. I'm taking a lot of time to develop this whole thing from the scratch. I might have legit थोड़ा बैठ के ना मैं पहले कोड करके लेके आता, तुम्हारे लिए ईजी रहता, बट इट्स फाइन. ठीक है, कोई बात नहीं. I have learned a lesson that I should not take this big project in live class. But although I love coding, but still. Okay, take input हुआ. अभी ये जैसे ही है बाय डिफ़ॉल्ट अगर जगह है तो -1 ना. सो लेट्स राइट इट डाउन लाइक let's write down the same thing here. Instead of true, let's put it like check. जब तक ये -1 रहेगा तब तक ये it will be the same. Check when. So the same thing is here. Done. Okay. If is empty, और लाइक इसको is empty को नाम चेंज करना ना गेम स्टेटस. ओके, सो गेम स्टेटस के अंदर ना अभी 4 पर्टिकुलर ये है. इफ़ गेम स्टेटस इज इक्वल टू 0, एक मास्टर स्कोर कहीं पे मेंटेन करना होगा भाई. ठीक है, स्कोर A इज इक्वल टू 0, स्कोर B is equal to 0. ठीक है, so that is the whole thing. Now if game status, ये सबको भी पता है, ये सबको भी ना तुम्हें उठा के एक while loop में लिखना होगा. अगर while loop में नहीं लिखोगे ना तो प्रॉब्लम होगा एक. फाइन, ठीक है. इफ गेम स्टेटस इज इक्वल टू 0, दैट यू कैन डू ऑन योर ओन, दैट्स ईजी पार्ट. प्रिंट लाइक सीधा स्कोर. आई थिंक ये सब भी करने की ज़रूरत नहीं है. लेट्स ट्राई इट आउट वंस. ओके, एक बार ट्राई करके देखते हैं. आई थिंक सारा कुछ आ गया है एकदम. ठीक है, एवरीथिंग इज़ ऑन प्लेस, इन द प्लेस. लेट्स ट्राई इट आउट. ओके, एक बार ट्राई करके देखते हैं. आई एम जूमिंग आउट अ लिटिल बिट ताकि सारी चीज़ें एक साथ मैं देख सकूँ. ये बेसिक लॉजिक है भाई.
ये empty board है. Player A will go first. This is a random function. So player give a number. So I'm giving 1. So I'll give 0. So valid input. आगे. Oh shit man. ये काम नहीं कर रहा. If it is empty, this has to run again, right? This has to run again. ये क्यों बंद हो गया? ठीक है, 0 to 8 वैलिड इनपुट आया. वैलिड इनपुट आने के बाद टेक इनपुट. ओके, प्रिंट बोर्ड. ओके, समझ गया क्यों ऐसा हुआ. रुक जाओ. ठीक है, तो ये तो पहले चीज़ है, इसको पहले डालो, वापस से रन करो. ठीक है, सो अगेन प्लेयर 1 इज गोइंग फर्स्ट, 0. सो दिस इज देयर. नाउ अगेन इट हैज़ टू कॉल बैक. ओके, इट हैज़ टू रन अगेन. इसको वापस से रन करना है, तो वो चेक कर रहा है. इस चेक व्हेन इज इक्वल टू -1. ओके, नॉट इक्वल टू, सिंपल. Let's say something I'm giving. Now this should work. 0. Okay, hey player 1, enter the position from 0 to 8. अभी 0 to 8 में कौन सा पोजीशन डाले? लेट्स अभी भी x हूँ ना. अगर x हूँ तो मैं क्या पोजीशन डालूँ? अभी बताओ. ये भाई चल गया है. ठीक है, अभी x हूँ तो क्या पोजीशन डालूँ? लेट्स राइट डाउन 5. ओके, so see 0 x, it's working. Now एंटर द पोजीशन इन बिटवीन 0 to 8. अभी मैं क्या पोजीशन डालूँ? अभी मैं 0 हूँ ना. सो हे 0, व्हाट इज़ दिस? सो आई वांट टू राइट डाउन, लेट्स से आई वांट टू पुट बीच में. सो क्या आता है बीच में? 4 आता है, राइट. 0 1 2 3 4 एंटर किया मैं. सो ये आ गया मेरा. अभी x हूँ मैं. सो इट इज़ लाइक हे प्लेयर 1, what do you want me to enter right now? So please tell me in the chat. So it's like I think I can enter थोड़ा कुछ logical. I should enter this obviously. What is this? This is 8. Okay, ये तो 8 आया. Okay, I have entered 8. तो ये तो हो गया. अभी मुझे यहाँ पे प्लेस करना होगा. I mean I need to place a O here, that is on second location. If I place on second location, I am here. अभी X will place here obviously. That will be on 1. Okay, it's working. Now it's O turn. Now O will obviously place here because ये तो है इसका. So what is this? 0 1 2 3 4 5 6 नंबर. 6 नंबर डालें भाई. अभी तो जीतना चाहिए ना 6 नंबर भाई. 6 नंबर के बाद तो जीतना चाहिए. वाई इट इज़ लाइक हे प्लेयर 1 अगेन. अरे यार जीतना चाहिए ना ये तो. शे मैन, कुछ तो गड़बड़ हो गया. कोई नहीं. सो लेट्स ट्राई इट आउट अगेन वन मोर टाइम. कौन सा लॉजिक था? अपना लॉजिक ये था कि भाई ये 642 in OOO. 642OO was there, right, in our condition? I hope 642OO was there in our condition. Condition में था या नहीं था? 642 I think 642 अगर है तो अपन को जीतना चाहिए. प्लेयर B इज़ विनर होना चाहिए ना. प्लेयर B या क्या है भाई? प्लेयर A है वो, प्लेयर B नहीं है. प्लेयर A है और ये प्लेयर B है. ओके, सो क्या है भाई? क्या लॉजिक है? कुछ तो कहीं चेक विन में गड़बड़ हो गया क्या? if player A wins, if print player A is winner और like print player B is winner 1 और ये 2 और ये -1.
Yes, he is a winner. Maybe diagram wasn't programmed. I don't know यार. क्या हो गया अभी, क्या प्रॉब्लम है यार शेव मैन, अभी तो खत्म होने आया था सब. ठीक है, फाइन, लेट मी जस्ट रन दिस होल एंटायर प्रोग्राम देन वी. अरे नहीं, ये बोल रहा है ना प्लेयर बी इज अ विनर. प्लेयर बी इज अ विनर ये बोल रहा है. सी इट इज ऑलरेडी स्टेटिंग दैट प्लेयर बी इज अ विनर बट इट इज नॉट एग्जिटिंग इट आउट. अगर एग्जिट आउट नहीं कर रहा बोल तो अपना गलती यहाँ पे, अपना गलती यहाँ पे है. जब तक -1 नहीं होता तब तक एग्जिट करो. अपन ही पागल है ना, अपन ने ही ऐसा डाला है. यहाँ पे 0 डाला तो एग्जिट होना है करके कहाँ लिखा है? यहाँ कहीं लिखा ही नहीं है, इसलिए एग्जिट नहीं हुआ वो. ठीक है, सो उसकी कोई गलती नहीं है, वो तो सही चल रहा है. मैं ही गधा हूँ, अपन ही गधे. अपन ने लॉजिक, वो एक छोटा सा लॉजिक गलत लिखा है. देखो यहाँ पे काम कर रहा है. ठीक है, सो नाउ लेट्स जस्ट राइट डाउन which others are empty. So fourth, third is empty, so I'm writing down third. Now again हर बार प्रिंट कर रहा है कि प्लेयर बी विनर हो गया भाई करके. नाउ व्हाट इज दिस? इट्स 7. सो लेट्स 7. प्लेयर बी इज विनर. यस आई नो प्लेयर बी इज विनर, बट man, this is out of, it's a circular loop kind of stuff. It's not exiting, so I need to stop it. So okay, छोटा सा एक चीज़ कर देते हैं. if gamer 0 is equal to 1, और यहाँ पे इसके अंदर no winstat. I am taking one more variable winstat, and now I will put a if else here. If winstat is equal to 0, or winstat is equal to 1, or winstat is equal to 2. Okay, the game status is equal to 1, else it has to be 0. Okay, now this should work fine. So player A, O will go first. Okay, O will go first. Now 1. यार इसमें क्या प्रॉब्लम है यार, क्या प्रॉब्लम है इसको ज़िंदगी में? एल्स स्टेटस I think okay, so let's just see what am I doing wrong. अच्छा, elif flag is equal to 0 for a in range 9. ठीक है, थोड़ा शांति रखो यार, 1 मिनट. इफ एक्सो लिस्ट i is equal to 0, अगर कोई खाली जगह मिले तो फ्लैग इज इक्वल टू 1. इफ फ्लैग इज इक्वल टू 1 तो भाई प्रोग्राम तो कंटिन्यू करना चाहिए. इफ ड्रॉ कब होगा? जब सारा का सारा आइटम फुल हो जाएगा. नहीं होता फुल तो इधर आओ.
सही है ना यार उधर तो इफ प्ले this is either win start or this is win start. If win start is equal to 0 1 or 2, 0 is like player 0 winning, 1 is like this 2. यहाँ पे प्रिंट डाल देते हैं डीबग करने के लिए. ओके प्रिंट win start विन 2 कैसे आया यार. ये फ्लैग ये भाई ये 2 कैसे आया. 2 बोले तो ड्रॉ होता है. ड्रॉ इज लाइक इफ xo list I is equal to this, then flag should be this. अगर empty है तो 1 आएगा ना. ये लॉजिक में कुछ तो गड़बड़ है यार. आई डोंट नो. लेट मी जस्ट ट्राई इट आउट थोड़ा रिवर्स करके. ठीक है ट्राई इट करते रुको. हाँ okay guys, I mean I'll give you it as a homework so you guys can actually debug this. I don't want you guys to wait more. Okay so ये एक कोई छोटा सा mistake है. I'll debug also and you can actually see the same URL. Okay so I'm not giving up on this. I just don't want to like have more audience dropped and all. Okay so this is the whole point. So just go ahead, check it out. Okay so this is the logic. Most probably this is the this is it. It's just that ये यहाँ पे कहीं पे टूट रहा है. ठीक है एक यहाँ कहीं टूट रहा है. So I'm just seeing where exactly is this going wrong. So I'll check that part. That's not a problem at all. Okay so I'll see where exactly is it going wrong. Why it is taking 2 I don't know. Okay fine ठीक है जो भी है चलो bye bye take care have a nice day and you guys can see this code maybe in half an hour I'll just debug it. Okay so chalo bye bye take care have a nice day and it's mostly do X or 0 game for to do. Got it. So just please upload your same project here onto this thing. Okay so that's it guys chalo bye bye take care have a nice day.